गणेश शरणं शरणं गणेश 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 सिद्धिविनायक शरणं गणेश सिद्धिविनायक शरणं गणेश बुद्धिप्रदायक शरणं गणेश बुद्धिप्रदायक शरणं गणेश गणेश शरणं 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 शरणं गणेश सिद्धिविनायक शरणं गणेश सिद्धिविनायक शरणं गणेश बुद्धिप्रदायक शरणं गणेश बुद्धिप्रदायक शरणं गणेश गणेश शरणं 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 शरणं गणेश सदा शिवा गुरो 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 सदा शिव गुरु गुरु गुरु
श्री महानंद ज्ञान गोविंद नमो शिव 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 गुरु 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 नमो 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 सदा शिव गुरु गुरु त्रिलोक विहारी भगत उद्धारी द्वंद्व निवारी नमो त्रिलोक विहारी जगत उद्धारी द्वंद्व निवारी नमो सद्गुरुदेवा ध्यान सुंदर करुणा सागर नमो 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 शिव शिव गुरु 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 नमो 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 शिव 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 गुरु 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 Gurudev, we have one announcement today. Pandit Nayan Ghosh is a legendary Indian musician, uniquely mastering both the tabla and sitar. With nearly 60 years of experience in performing worldwide, he is celebrated for his deep knowledge of music and the prestigious Sangeet Natak Academy Award, amongst others. Along with him is Raghav Tanikela, an IIT Kharagpur BTech second year musically prodigious student. Raghav will be playing flute today, and both of them will be playing sitar and flute in satsang. Pranam Gurudev. I will offer at your lotus feet Raga Shuddha Kalyan in Alap form, and after me, this young musician will also perform. Seek your permission.
बहुत अच्छा। जब संगीत होता है कि आंख बंद करके उसमें तल्लीन होना चाहिए, तब मेडिटेशन हो जाता वो। भगवान शिव कहते हैं शब्द ब्रह्मणि निष्णाता परम ब्रह्माधिगच्छति। शब्द ब्रह्म, नाद ब्रह्म में होते 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 इसमें पिघल जाना चाहिए, सब विश्राम में जाना चाहिए, तब ध्यान हो जाता उस वक्त। हाँ, Jai Gurudev Guruji. Some questions from AMP. गुरुदेव, क्या यंश को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र का होना जरूरी है? देखो ये आप पर निर्भर है, आपको बच्चे चाहिए तो बच्चे करिए। हाँ, वंश तो बढ़ता रहेगा। वंश व्यतीत सिर्फ तुम एक ही थोड़ी ना, पता नहीं तुम्हारे कितने चाचा ताऊ जी, चाचा जी, तुम्हारे मामा मामी, पता नहीं कितने लोग रहे हों दुनिया भर में। तुमको लगता है तुम्हें बच्चे चाहिए तो करना, समय पर करना फिर तुम्हारा। गुरुदेव, जब मैं कोर्स में आती हूँ तब मुझे ऐसा लगता है कि मैं आर्ट ऑफ लिविंग का बहुत काम कर पाऊंगी, लेकिन जब घर जाती हूँ तब उत्साह कम हो जाता है। हाँ, क्या उत्साह करूँ? नहीं, फिर माया में उलझ जाते हैं, इसलिए बार बार आना चाहिए। इसलिए वहाँ स्थानीय केंद्र के साथ जुड़े रहना चाहिए, अपना जगह जगह सत्संग ग्रुप से है ना, उस सत्संग में जाओ, फॉलो अप में जाते रहो तो ये एनर्जी बनी रहेगी। टीचर बन जाओ फिर, है ना? गुरुदेव, हम प्राकृतिक खेती के को बढ़ाने के लिए और उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ाने के लिए हम प्रचार करते हैं, लेकिन अब तक रासायनिक खाद और कीटाणुनाशक का निर्माण करने वाली कंपनियों पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। हमें इसके लिए क्या करना चाहिए? जो अपने से हो सकता है वही करें, जो नहीं हो सकता उसके बारे में सोच के बैठने से कोई लाभ नहीं है, ठीक है ना? हाँ, गुरुदेव, ध्यान में एक बार ये अनुभव कर लिया कि सारा ब्रह्मांड हमारे अंदर ही है, गुरु और हम एक स्वरूप है। उसके बाद भी गुरु सामीप्य की तृष्णा क्या वितृष्णा है? गुरु से आसक्ति होना उचित है या नहीं? नहीं, कृपया मैं ये तो सहज है, ये आसक्ति तो रहनी चाहिए। ये आसक्ति आखिरी आसक्ति, इसको रहने से बाकी आसक्तियां छूट जाती हैं। तो ये ज़रूरी है, कहीं एक तो लगन लगना चाहिए। ऐसी आसक्ति लगती है तो उसको बनाए, उसको रहेगी, वो तो तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं। गुरुदेव, मैं एक बार कमजोरी के कारण गिर गई और किसी ने मेरे सिर पर हाथ रखा और मैं उठकर बैठ हो गई। फिर पता चला मुझे ब्लेसिंग दी गई थी। ये ब्लेसिंग देने की शक्ति कहाँ से आती है? गुरु से जुड़े रहने से ब्लेसिंग देने की शक्ति आ जाती है। Gurudev, sometimes people around us are agitated and fussy. Even if we try to explain, they don't listen. In that case, what is your advice? You put your sankalpa, your intention, and then you will see, it will take a little while and it will manifest. You can't change anyone like that. Everybody has their own time to change, but you keep putting your effort. Huh? Is scenery an illusion, or both seer and scenery are an illusion? Illusion is another level. You don't go into it. Now you just
scenery and seer. Otherwise, you'll get confused, and it will become a hodgepodge. When you are with this, when you feel this is all real, then you can see, oh, yeah, this is real, okay, but I am real, the scenery is real, but scenery is different from me. Just keep it so simple at that. Got it? And then further on, one day when you feel, oh, this is all illusion, then you will see that that is Vedanta. It's another level of awareness. It naturally comes. You can't force it on yourself. But again and again you can wake up and see, oh, everything is changing, so this is all illusion. Yeah? And what we consider as seer, just the one who is seeing, and the body, the mind complex, yeah, that is also part of the scenery. The real seer in you is just pure energy, and that's beyond change, that's beyond change, that's beyond scenes, right? That is real. Gurudev, why has nature made men and women so different? One is deeply emotional, while the other seems indifferent to emotions. This Well, creates. these questions are futile questions. Why you want to find a reason why men or women are different? They are different, that's it. If you ask me why banana is long and apple is round, I say that is how they are. You don't have any other question to ask, then you keep wondering about these sort. You should only wonder, you cannot even ask such questions. Got it? This is how the nature is. Why means why? That is how it is. You can ask why both the eyes are in one place. One eye should be here, one eye should be in the back. These questions doesn't make any sense. Do you get it? Gurudev, are we all on the spiritual path with you as a guru, ready for enlightenment? Or will some of us have to wait for more lifetimes to reach there? You're all here, don't worry. Don't have to postpone it for another lifetime. I want to finish the work now, so let us see. Okay. Why does everyone leave me and go, especially whom I love? They don't leave you and go, you are running after them. You just stay where you are and be centered, everything will come to you. Is having sex bad? Good? I have said no. If you run after joy, you can never have it. But if you are stable, the fun will run after you. The fun, joy will come to you. Yeah. Is having sex bad? Good? Or is it beautiful, ugly? Because I had physical relationship with multiple girls. I'm still not married and feel weird now. Well, why you want to tag sex good or bad? It can be good, it can be bad. You are here because of sex only. You are a product of sex. How it can be bad? And if you misuse it, like what you are saying, it is going to be bad. It is bad. If you are hanging on to it, it is like an obsession. People obsessed with sex don't